we have learned vectors. We have learned. आप लोग बताइए, what are the different types of vectors? Different types of vector बताइए आप लोग क्या क्या है? अरे यार जल्दी जल्दी बताइए, different types of vectors क्या क्या है वो बताइए। हमने vectors नहीं पढ़ा है क्या? Can you hear me? आप लोग ने पढ़ा है vectors, different types of vectors? अच्छा, यूनिट वेक्टर, व्हाट डज यूनिट वेक्टर मीन? यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? व्हाट इज यूनिट वेक्टर? मैग्नीट्यूड इज 1. व्हाट इज नल वेक्टर? मैग्नीट्यूड इज 0. नल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड इज 0. अच्छा, सपोज दिस इज अ वेक्टर. सपोज दिस इज अ वेक्टर. इसका लेंथ हमें क्या देगा? व्हाट डज लेंथ गिव्स अस? लेंथ magnitude. Length gives us magnitude. And arrow, what does it give us? Arrow? Direction. Arrow हमें direction देता है. Arrow is direction, length is magnitude. ये सब आपको पता ही है. Length gives us magnitude, arrow gives us direction. Okay? इतना सब आप लोग को पता है. Length gives us magnitude, arrow gives us direction. अच्छा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब क्या है? सपोज ये एक वेक्टर है A और ये एक वेक्टर है B, then this is the angle between them. Angle between two vectors का मतलब क्या है? Angle between their direction. सपोज ये एक वेक्टर है A, ये एक वेक्टर है B, तो यहाँ एंगल कौन सा होगा? We'll extend this one. हम इसको एक्सटेंड करेंगे और ये एंगल हो गया थीटा. ठीक है, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुका है. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मींस एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस. हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि इफ यू हैव अ वेक्टर, उसका डायरेक्शन उल्टा कर देने से, लेंथ सेम रख के डायरेक्शन उल्टा कर देने से हम साइन भी चेंज कर लेते हैं. माइनस ए, इट बिकम्स माइनस ए. दिस थिंग वी हैव लर्नड. Okay, now today we will learn addition of vectors. Addition of vectors. ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे addition of vectors. ओके, आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स. अच्छा, आप ये बताइए, अगर मैं यहाँ 5 + 3 सपोज 5 + 3 कितना है? 5 + 3 अगर हम लिखते हैं यहाँ कितना होता है? 8. आप याद रखिए, वेक्टर में 5 + 3 may not be 8 नहीं भी हो सकता है. 5 + 3 से इसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअली we tell sum. 8 is actually the sum of 5 and 3. हाँ, समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ क्या है, आप दो नंबर को ऐड कर रहे हैं और ऐड करने के बाद जो आता है उसे हम सम कहते हैं. ठीक है, आप दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, 5 और 3 दो नंबर है. दो नंबर को ऐड करने के बाद जो आया उसे हम सम कहते हैं. सम. इतना तो सबको पता है. अब दो नंबर ऐड कीजिए, कोई भी दो नंबर, उसके बाद जो आएगा उसे हम सम कहेंगे. If we
add two vectors, अगर हम दो वेक्टर ऐड करते हैं, then it will be called resultant. हाँ, सपोज हमने दो वेक्टर को ऐड किया, अगर हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं then we will tell it as resultant. ठीक है, समझ में आया? यहाँ जैसा मैंने बताया 5 + 3 = 8. 8 आप क्या कहते हैं? 8 is the sum of these two. यहाँ sum हम कह रहे हैं sum. ऐसा हम क्या करेंगे? यहाँ sum हमने कहा, वहाँ क्या करेंगे? वहाँ हम बोलेंगे resultant. ठीक है? हाँ, two vectors A and B, when added, जब हम add करेंगे, added, give a resultant R. एक resultant देगा, give a resultant. So R actually क्या होगा? A + B. ये दोनों वेक्टर्स है, आप एरो देना मत भूलिए, अगर आप एरो देना भूल गया तो सब चला गया. इतना समझ में आया कि नहीं? दो वेक्टर को हम अगर ऐड करेंगे, if we add two vectors, we'll get a resultant आएगा. ठीक है? When we add two vectors, we'll get resultant. जैसा 3 + 5 को हम ऐड करेंगे, then we will get 8. 8 is called sum. यहाँ ऐसा. लेकिन A का मैग्नीट्यूड 3, B का मैग्नीट्यूड 5 होने से R का मैग्नीट्यूड 8 नहीं होगा. You understood? हाँ, yes or no कुछ बताइए. Yes sir. तो ये रिजल्टेंट कितना होगा? A का मैग्नीट्यूड देखिए, हम दो वेक्टर्स को ऐड किया, दो वेक्टर्स को हम ऐड किया, या देखिए दो वेक्टर्स को हम ऐड किया, ये दोनों वेक्टर को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद हमें रिजल्टेंट आया. ए और बी को ऐड किया और दोनों को ऐड करने के बाद रिजल्टेंट आया. ऐड करने के बाद रिजल्टेंट आया. तो अलजेब्रा में क्या होता है? सपोज ए का मैग्नीट्यूड 3 है, सपोज अलजेब्रा में हमने जो पढ़ा है, ए का मैग्नीट्यूड, सपोज एज मैग्नीट्यूड इज 3, बीज मैग्नीट्यूड इज 5, ऐड करने के बाद मैग्नीट्यूड आएगा 8. ये आ जाएगा अलजेब्रा में. यहाँ ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 8 नहीं आएगा, नहीं भी आ सकता है, कभी कभी आ सकता है, लेकिन जनरली नहीं आएगा. तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ठीक है, ये निकालने के लिए वी हैव सम लॉज, हम कुछ लॉ यूज करेंगे. उसका मैग्नीट्यूड, ये R जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड के लिए हम लॉ यूज करेंगे. वन इज ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन. Triangles law of addition. Triangles law of addition. Okay, one is triangles law of addition. It tells that if two vectors are represented, by two sides of a triangle, then the resultant is given by the third side of the triangle
triangle, draw from the tail of one vector to the tip of the other. Drawn from the tail of one vector to the tip of the other. ठीक है, ये पढ़िए आप लोग, ये स्टेटमेंट बार बार पढ़ते रहिए। पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए, उसके बाद कुछ बार कुछ पढ़ते रहिए, मैं समझा दूंगा आप लोग को। ये स्टेटमेंट जो है आप लोग 3-4 बार पढ़िए, मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। You remember what do we mean by tail and tip? याद है? Yes, sir. हाँ, अगर ये एक वेक्टर है, देखिए ये अगर एक वेक्टर है, then this one is tail, ये tail हो गया, and this one is tip, ये tip हो गया। ओके, अगर ये एक वेक्टर है, then this one is tail, this one is tip, ये tail हो गया, ये tip हो गया वेक्टर का। तो आप लोग पढ़िए, ये स्टेटमेंट बार बार पढ़ते रहिए। बार बार ये पढ़ते रहिए। तो यहाँ क्या दिया है, देखिए मैं समझा रहा हूँ, आप लोग एक बार समझ लीजिए, बाद में फिर एक बार पढ़िएगा। इफ टू वेक्टर्स, ये देखिए, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, याद देखिए, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये देखिए, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, सपोज ये एक वेक्टर है, suppose this is one vector a is one vector, and suppose this is another vector, this is another vector b, two vectors are there, ये एक वेक्टर था, this is one vector, this is another vector b, ठीक है। two vectors are represented by two sides of a triangle। तो यहाँ देखिए, this is the angle between the two vectors, this is the angle between the two vectors, angle between two vectors। So if two vectors are represented by two sides of a triangle, the resultant, what gives us the resultant? What will give us the resultant? Resultant is given by the third side. Third side resultant देगा, मतलब this side will give us the resultant.
This side will give us resultant. Resultant will be given by third side, resultant. Now, what will be the direction? You see, resultant is given by the third side of the triangle, drawn from the tail of one to the tip of the other. Tail of one. ये देखिए, first vector का ये tail है. This is the tail, and this is the tip. So direction will be like this. This is R, resultant. A or B are two vectors here. A and B are the two vectors. Resultant is given by the third side of the triangle, drawn from the tail of one to the tip of the other. ये आप लोग एक बार फिर से पढ़िए और देखिए समझ में आया कि नहीं. एक बार फिर से पढ़िए पूरा वाला. एक बार फिर से पढ़िए और देखिए समझ में आया कि नहीं. अच्छा, ये एक लॉ है. वी कैन यूज दिस लॉ. हम ये लॉ यूज कर सकते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए. अभी इसका ये जो लाइन है, अगर हम इस लाइन का लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, इट विल गिव अस मैग्नीट्यूड. ठीक है, ठीक है. अगर हम इस लाइन का लेंथ मेजर कर लेते हैं, लेंथ हमें मैग्नीट्यूड दे देगा. ये आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो लेंथ दे देगा. और ये एरो एरो हमें डायरेक्शन दे देगा. एरो हमें डायरेक्शन देगा. तो एरो निकालने के लिए अगर हम ये एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं, ये एंगल, अगर हम ये एंगल कैलकुलेट कर लेंगे सपोज अल्फा, तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगा. ठीक है, समझ में आया. अगर ये लाइन का हम लेंथ मेजर कर लेते हैं, वी कैन मेजर द लेंथ यूजिंग अ स्केल. हम एक स्केल यूज करके मेजर कर सकते हैं इस लाइन का लेंथ. वो हमें मैग्नीट्यूड दे देगा. और ये एंगल अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये डायरेक्शन भी मिल जाएगा. वी विल गेट द डायरेक्शन. ओके. अच्छा, एक और लॉ है. दिस इज वन लॉ, one of the law of addition. We have another law of addition. Another law of addition we have. It's called the parallelogram law. Parallelogram law of addition. We have another law. It's called parallelogram law of addition. If two vectors are represented by the two adjacent sides of a parallelogram. If two vectors are represented by the two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is given, by the diagonal of the parallelogram drawn from the tail of both the vectors.
आई रीड दिस लॉ, बार बार ये लॉ पढ़ते रहिए आप लोग. You read this law again and again. आप लोग देखिए, if two vectors, आप लोग पढ़िएगा, are represented by the two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is given by the diagonal of the parallelogram drawn from the tail, important tail of both the vectors. Okay, if two vectors are represented by the two vectors represented by the two adjacent sides, two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is given by the diagonal of the parallelogram drawn from the tail of both the vectors. Okay, so इसका मतलब क्या है? Let's see the meaning. Now let's see the meaning. Suppose this is one vector, this is one vector A. And this is another vector B. This is another vector B. This is the angle between them. So what we will do, we'll complete the parallelogram here. हम parallelogram complete कर लेंगे यहाँ. We'll complete the parallelogram. And the diagonal will give us the resultant. हम ये parallelogram complete करेंगे. We'll complete the parallelogram. We'll complete the parallelogram, and the diagonal will give us the resultant. This is the parallelogram, and the diagonal, which diagonal? आप देखिएगा एक बार फिर से. Which diagonal will complete the parallelogram, and the diagonal, which diagonal drawn from the tail of both the vectors. Drawn from the tail of both the vectors. ये देखिए दोनों वेक्टर का tail है, तो यहाँ से हम diagonal draw करेंगे इस point से. ये क्या करेगा? हमें resultant देगा. This will give us the resultant. Sir, can you please repeat it? Sure. Sure. आप लोग स्टेटमेंट एक बार पढ़िए, जो स्टेटमेंट है वो एक बार पढ़ लीजिए. आप लोग एक बार स्टेटमेंट पढ़ लीजिए फिर से. एक बार ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का. If two vectors are represented by the two adjacent sides of a parallelogram, resultant is given. ठीक है. इसमें देखिए ये A एक वेक्टर है, B एक वेक्टर है, ये वाला, ये दो two vectors are represented by two adjacent sides. यहाँ हम क्या करेंगे? ये पैरेललोग्राम को हम कंप्लीट कर देंगे.
ठीक है, विल कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम। सपोज हमने ये पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दिया, सपोज हमने ये पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया, विल कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम, विल कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम। ओके, विल कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट किया। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। डायगोनल कौन सा डायगोनल, व्हिच इज फ्रॉम द टेल ऑफ बोथ द वेक्टर्स। यहां से हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे। डायगोनल शुड बी फ्रॉम द टेल ऑफ बोथ द वेक्टर्स। ये जो हमने डायगोनल ड्रॉ किया, दिस विल गिव अस द रिजल्टेंट। ये डायगोनल हमें रिजल्टेंट देगा। ओके, ये समझ में आया कि नहीं? ये देखिए, ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम देगा। हमने क्या किया, पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दिया। वी हैव कंप्लीटेड द पैरेललोग्राम एंड द डायगोनल। पैरेललोग्राम का दो डायगोनल होता है। Parallelogram has two diagonals, and which diagonal we will consider from the tail of both the vectors? Tail of both the vectors, ठीक है? तो ये देखिए, ये पॉइंट क्या हुआ, टेल ऑफ बोथ द वेक्टर्स हो गया। अच्छा, ये डायगोनल का जो लेंथ है, लेंथ विल गिव अस मैग्नीट्यूड। This diagonal length of this line will give us magnitude. Length of this line, इस लाइन का लेंथ अगर हम मेजर कर लेते हैं, वो मैग्नीट्यूड दे देगा। और अगर हम ये एंगल मेजर करते हैं, तो दैट विल गिव अस द डायरेक्शन। ओके, सो नाउ आवर एम इज टू फाइंड मैग्नीट्यूड। To find magnitude of resultant, first we'll find magnitude. To find magnitude of resultant, magnitude of resultant, to find magnitude of resultant, r का हम magnitude कैलकुलेट करेंगे। ओके, suppose this is O A B C, O A B C में देखिए, हम क्या करेंगे, O A को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। विल एक्सटेंड O A, थोड़ा एक्सटेंड किया, और C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, O A को थोड़ा एक्सटेंड किया, C से एक परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया D। ये हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यहाँ, और यहाँ देखिए, you see that this line OB and AC, they are parallel. OB and AC are parallel. OB parallel to AC, और लेंथ भी इक्वल होगा। OB will be equals to AC। ठीक है, दोनों साइड, ये साइड और ये साइड, लेंथ भी इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा, because opposite sides of a parallelogram, opposite sides of a parallelogram are equal and parallel। ठीक है, and OB, length of OB is what is the length of OB? OB का लेंथ क्या देगा हमें? Length of OB, what will it give us? Length of OB, what it will give us? B, sorry, ये क्या लिखा मैंने? OB is parallel to AC and OB is equal to AC, और लेंथ ऑफ OB हमें क्या देगा? लेंथ ऑफ OB will give us B, लेंथ ऑफ OB is B। ठीक है, ये याद रखिए, ये आप लोग याद रखिएगा।
Opposite sides of ये ज्योमेट्री आप लोग ने पहले पढ़ लिया है. You have studied them in class 9. That opposite sides of a parallelogram are equal and parallel. So अभी ये एंगल, अच्छा, दो लाइन पैरेलल उनसे ये भी थीटा हो जाएगा. This angle also will be theta. If two lines are parallel, then this angle is ये line है. If two angles are parallel, then if two lines are parallel, the angles, this corresponding angles are equal. OBC angle BOA should be equals to angle CAD, and that should be equals to theta. ये सब आप लोग ने ज्योमेट्री में पढ़ा है. Now coming to this one, we want to find magnitude of R. Magnitude of R हमें निकालना है. ठीक है, ये सब चीज आपको यहाँ नहीं चाहिए. ये सब चीज आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है. We will use them now. ये ट्रायंगल देखिए आप. Look at this triangle. ACD. ACD. Triangle ACD देखिए आप. Triangle ACD. In triangle ACD. ACD पे देखिए. Triangle ACDP. ACD देखिए इस triangle ACD. AD, yes, AD by AC will give us cos theta. AD by AC gives us cos theta. ठीक है? AC is B. AC is B. AC is B. AD by B is cos theta. AD will be B cos theta. Equation number 1. Again हम end लिखेंगे. End यह देखिए end. पहले हम AD by AC लिखा. AD by AC. CD by AC कितना होगा? CD या CD by AC. CD by AC कितना होगा बताइए आप लोग फिगर से. And CD by AC कितना होगा बताइए. हाँ, क्या होगा? CD by AC is sin theta. ठीक है. CD by AC तो B है, हमने यहाँ देखा. AC is B. यहाँ देखिए AC is B equals to sin theta. CD will be B sin theta. ये इक्वेशन नंबर 2 है. इक्वेशन 1 और 2 दोनों समझ में आया कि नहीं? एक बार चेक कर लीजिए. ओके. अभी ये ट्रायंगल पे देखिए. OCD पे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. इन ट्रायंगल OCD यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम. OCD is a right angle triangle. OCD is a right angle triangle. In triangle OCD, in triangle OCD, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से क्या आएगा? OC square equals to OD square. OC square equals to OD square plus DC square. ठीक है.
ये फिगर में देखिए OC स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर, ये OD प्लस DC CD स्क्वायर, ये साइड पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया। ठीक है, हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम OC स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। अच्छा OD देखिए, OD ये यहां से यहां तक OD वी कैन राइट OA प्लस AD। OD हम देख सकते हैं OA प्लस AD। OD को हम देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं OD OA प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ओके, या सबको आया? एक बार फिर से आप ये फिगर पे देखिए OC, ये जो OC है, ये वाला OC लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स अस मैग्नीट्यूड, इसका R हो जाएगा। OC का मैग्नीट्यूड R होगा। OA देखिए, ये OA का तो A हो जाएगा, लेंथ A है, OA का लेंथ A है, OC का लेंथ R है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे OC is R, OA is A, AD इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं। आप इक्वेशन 1 पे देखिए 1 and 2, 1 पे देखिए AD is, इक्वेशन 1 पे देखिए AD is B cos theta and CD is B sin theta, B cos theta, B sin theta स्क्वायर। इसको आप A प्लस B होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कीजिए। A स्क्वायर प्लस 2AB, B is B cos theta, प्लस B स्क्वायर होगा B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस इसका स्क्वायर में आएगा क्या, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, यहां से अगर हम B स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये आएगा। एंड व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा? ये क्वांटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना आएगा? हाँ, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1। सो हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे दोनों साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे r स्क्वायर है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे r स्क्वायर है, implies r will be root of r, a square is there, ये क्वांटिटी 1 हो गया, ये क्वांटिटी 1 हो गया, सो b स्क्वायर ही रहेगा, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, plus 2ab cos theta, and this is the most important one, आपको याद रखना पड़ेगा, this is the most important one. This gives us the magnitude of the resultant. If we add two vectors, this is the magnitude of resultant. If we add two vectors, this gives the magnitude of resultant. ये आपको याद रखना पड़ेगा। If you add two vectors, this gives the magnitude of resultant. ये magnitude आपको याद रखना पड़ेगा। If you add two vectors, this gives the magnitude of resultant. Magnitude का मतलब क्या है? उस लाइन का लेंथ है। Length gives us magnitude, याद रखिए।
आप लोग चेक कीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए पूरा। हमने सिर्फ ज्योमेट्री यूज किया, क्लास 9 का जो ज्योमेट्री आपने पढ़ा है वो क्लास 9 का ज्योमेट्री हमने यूज किया। ठीक है, आपने क्लास 9 में जो सब ज्योमेट्री पढ़ा है हमने वही ज्योमेट्री यूज किया। We have not done anything extra. हाँ, OB इक्वल्स टू SEHI अच्छी कहाँ से मिला आपको? मासूद जी आप चेक कीजिए। सर ओसी मासूद जी आप देखिए OB, मासूद जी आप देखिए क्या है OB, ये साइड OB है, ये साइड OB और SE ये दोनों साइड इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। आपको अच्छी कहाँ से मिल गया तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और आपने पैरेललोग्राम नहीं पढ़ा क्या क्लास स्कूल में 9 में कि ऑपोजिट साइड्स, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है कि हमें डायरेक्शन निकलना है इसका। डायरेक्शन, डायरेक्शन देखिए, अगर हम ये एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं, ये एंगल देखिए, अगर हम ये एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगा अल्फा। अल्फा लिखते हैं हम, हा? अगर ये एंगल हम कैलकुलेट करते हैं डायरेक्शन मिल जाएगा। तो चलिए हम एक बार डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। to find the direction of resultant का डायरेक्शन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, we want to find the direction of resultant। कहाँ है ये देखिए, ये हम एक्चुअली ये एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा अल्फा। अगर हम ये एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं then we'll get the result। ठीक है, तो ये ट्रायंगल फिर एक बार से देखिए, OCD ट्रायंगल, ट्रायंगल OCD देखिए, इन ट्रायंगल OCD, ट्रायंगल OCD पे देखिए एक बार, ट्रायंगल OCD पे tan अल्फा क्या लिख सकते हैं हम लोग? tan अल्फा इज CD बाय OD। हम लिख सकते हैं कि नहीं? tan अल्फा इज CD बाय OD लिख सकते हैं कि नहीं? tan अल्फा इज CD बाय OD लिख सकते हैं कि नहीं आप लोग? अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, हाँ तो लिख लीजिए, अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। tan अल्फा इक्वल्स टू CD, लिखा आप लोगों ने? tan अल्फा इक्वल्स टू CD बाय OD। ठीक है, OD में देखिए, OD हम क्या लिख सकते हैं? OA प्लस AD, OA प्लस AD ऐसा लिख सकता है। OD को OA प्लस AD हम लिख सकते हैं।
ऑडी को देखिए, ऑडी को ओए प्लस एडी हम लिख सकते हैं कि नहीं? तो सी डी बाई ओए प्लस एडी हमेशा लिख सकते हैं, ओए प्लस एडी। ठीक है, सी डी आप ये इक्वेशन 1 पे देखिए, सी डी है बी साइन थीटा, यानी कि सी डी इज बी साइन थीटा, एडी इज बी कॉस थीटा। CD is B sin theta, AD is B cos theta. CD is B sin theta, AD is B cos theta. And OA देखिए, OA ये है, ये OA. It's the length of this vector. ये वेक्टर का लेंथ है, तो ये वेक्टर का लेंथ कितना है? A. So tan alpha equals to this much. अगर आप ये याद रख लेते हैं, you need to remember this, you can find angle. आपको ये याद रखना है, then you can find angle. ये दो important है। डायरेक्शन, ये this gives us magnitude, ये magnitude हमें देते हैं। this gives us magnitude, and ये वाला क्या है? हमें magnitude दे रहा है, और ये वाला हमें डायरेक्शन दे रहा है। ओके, सो व्हाट यू डू, आप एक बार एक काम कीजिए, पहले ट्रायंगल्स लॉ एक बार पढ़िए, फिर पैरेललोग्राम लॉ एक बार रिवीजन दीजिए, फिर वो मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट हमने कैसा कैलकुलेट किया वो एक बार चेक कीजिए। First you study triangles law, then you study parallelogram law, then you find out how we have found magnitude and direction of resultant। एक बार चेक कर लीजिए। Any questions, any difficulty, any doubts you want to ask? Any doubts, any difficulties that you want to ask? अच्छा, आप लोग याद रखिए, ये याद रखिए, you remember whether you use triangles law or parallelogram law, कोई भी लॉ यूज कीजिए, ट्रायंगल्स लॉ हो या पैरेललोग्राम लॉ, कोई भी लॉ यूज कीजिए, यू विल गेट द सेम थिंग। ठीक है, एनी लॉ यू यूज यू विल गेट द सेम थिंग। अब पैरेललोग्राम लॉ यूज करने से लेंथ और ये एंगल अल्फा सेम थिंग मिलेगा, सेम थिंग आएगा आपको। ठीक है, इफ यू यूज पैरेललोग्राम लॉ सेम थिंग। आप ट्रायंगल्स लॉ भी यूज कर सकते हैं, ये ट्रायंगल्स लॉ
सेम थिंग आएगा, लेंथ विल गिव अस आर अल्फा, सेम आएगा दोनों का वैल्यू सेम आएगा. सो यू कैन यूज एनी लॉ एज यू विश. आप कुछ आपको जो अच्छा लगता है यू कैन यूज दिस लॉ. ओके. ओके, नाउ लेट मी शेयर अ प्रॉब्लम. आप लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए. आई शेयर ए प्रॉब्लम. ये वाला. You solve this problem. ये वाला नहीं, not this one, the other one. This problem you solve. You read first. You read the question, write the question, and then you solve. You have two vectors, each of magnitude a. हाँ, मतलब क्या है कि a का मैग्नीट्यूड तो a है ही, b का मैग्नीट्यूड भी a है. ठीक है. Two vectors, each of magnitude a, have a resultant of same magnitude a. तो resultant का मैग्नीट्यूड भी a हो गया. Find the angle between them. एंगल निकलना है. फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए. टू वेक्टर्स a एंड b दोनों का मैग्नीट्यूड a है, रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड a है. थीटा आपको निकलना है. जस्ट राइट द फॉर्मूला एंड यू विल गेट. आप फॉर्मूला लिखिए और आपको आ जाएगा. अब सिर्फ फॉर्मूला लिखिए, आ जाएगा.
So what is the formula? A resultant. What is the formula for the resultant? Resultant का formula आपको लिखना पड़ेगा. R equals to root of R, A square plus B square plus 2AB cos theta. This is the formula for resultant. R का मैग्नीट्यूड A है, A का मैग्नीट्यूड A है, B का भी A है. हाँ, A का तो A है, B का भी A है, प्लस 2A cos थीटा. थीटा हमें निकालना है. If you square both sides, दोनों साइड को स्क्वायर कीजिए. A square, 2A square प्लस 2A square cos थीटा. यहाँ से cos थीटा निकाल लीजिए. cos थीटा इज माइनस हाफ. cos थीटा आप कैलकुलेट कीजिए, माइनस हाफ हो जाएगा. cos थीटा इज माइनस हाफ. ठीक है. cos थीटा इज माइनस हाफ. तो थीटा कितना होगा? टेबल मैंने दिया था आप लोगों को. टेबल दिया था कि नहीं? cos थीटा माइनस हाफ होने से थीटा 120 डिग्री. थर्ड ऑप्शन आएगा आप लोगों को. ठीक है. All of you got? Okay. Now you try this one. ये प्रॉब्लम आप लोग ट्राई कीजिए. ये प्रॉब्लम जो है वो ट्राई कीजिए. आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए. यू राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक है. ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए. यू ट्राई दिस क्वेश्चन. फर्स्ट यू कॉपी द क्वेश्चन, देन यू विल ट्राई.
आप लोग ने क्वेश्चन कॉपी किया? ऑप्शंस कॉपी किया? ऑप्शंस आप लोग है कि नहीं? आर यू देयर और नॉट? सर किया। अच्छा ठीक है, ऑप्शंस भी कॉपी कर लिया। ठीक है, तो मैं ऑप्शंस ऑप्शंस भी आप लोग ने कॉपी किया। चलो I see the resultant of two vectors. Question पढ़िए, the resultant of two vectors at an angle 150. That means theta is 150 दिया हुआ है, theta is 150 और resultant का magnitude दिया हुआ है 10 units and is perpendicular to one vector. Perpendicular to one vector, एक vector के ऊपर perpendicular है. Suppose ये vector A है. It's perpendicular to one vector. Suppose ये vector A है, resultant is perpendicular to one vector. Resultant is perpendicular to one vector. So ये resultant होना है, resultant. और B vector तो it will be like this, B vector. क्योंकि इन दोनों का बीच एंगल दिया हुआ है 150. ये रिजल्टेंट हो गया. ठीक है, समझ में आया? थीटा 150 है, 150 और ये जो एंगल है, ये एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद ए, ये अल्फा. सो अल्फा कितना आया? अल्फा इज 90 डिग्री. ठीक है, इतना तक समझ में आया सबको? Now you write the formula for 10 alpha. 10 alpha का फॉर्मूला क्या है? हमने पढ़ा था b sin थीटा. आप लोग चेक कीजिए, b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा. b sin theta by a plus b cos theta. So 10 alpha तो 90 हो गया, b sin theta by a plus b cos theta हो गया 150. Okay, 1090 is infinity. 1090 is infinity. b sin theta by a cos 150 is minus root 3 by 2 b. Okay, cos 150 is minus root 3 by 2b. हाँ, बहुत सारे करेक्ट आंसर आया है. बहुत सारे आंसर्स करेक्ट है.
So cos 150 is minus root 3 by 2. Now you see, here it is alpha means infinity, infinity. 1090 is infinity. Okay? 1090 is infinity. You get infinity when you divide by 0. Okay, 1090 is infinity, and you get infinity when you divide something by 0. आप तभी infinity आपको मिलेगा जब आप 0 से divide करेंगे. Okay, so therefore आपको infinity तभी मिलेगा जब आप 0 से divide करेंगे. So therefore a minus root 3 b by 2 should be 0, which means b will be 2a by root 3. Okay, b will be 2a by root 3. Okay, again you see this resultant is given to be 10. ये जो resultant है वो 10 दिया हुआ है. Again, resultant का formula क्या है? Root of r, a square plus b square plus 2ab cos theta. Resultant is 10, हम square कर देंगे दोनों साइड को. a square b square होगा 4a square by 3. ये b है, इसको आप स्क्वायर करने से 4a square by 3 होगा, प्लस 2a, b होगा 2a by root 3, and cos 150 is minus root 3 by 2. Cos 150 is minus root 3 by 2. Cos 150 is minus root 3 by 2. So 10 square is 100. A square plus 4a square by 3 minus into plus minus हो जाएगा 2 cancel, root 3 cancel, 2a square. यहाँ से a आ जाएगा आप लोगों को. यहाँ से a आ जाएगा. a कितना आएगा? 4 by 3 minus 1 is 1 by 3, 300, root 300. रूट 300 आप कैलकुलेशन आप लोग खुद से कीजिएगा. रूट 300 का मतलब है 10 रूट 3. ठीक है. बट व्हाट यू सी, यू आर आस्क्ड टू फाइंड द स्मॉलर वेक्टर. अभी ए स्मॉलर है, हम लोग को कैसा पता चलेगा? यहाँ देखिए, यू वांट टू फाइंड द स्मॉलर वेक्टर. आपको स्मॉलर वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा. स्मॉलर वेक्टर, ठीक है. लेकिन a स्मॉलर होगा वो हमें कैसा पता चलेगा? हाउ शैल वी नो दैट a इज स्मॉलर? सो हम क्या करेंगे, हम b का भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, b का है, ये देखिए b का है 2a by 3. सो b विल बी 2a, इट्स 10 root 3 by root 3. सो root 3 कैंसिल जाएगा 20. a का है 10 रूट 3, b का है 20. अभी कौन सा स्मॉलर हुआ? 10 रूट 3 का वैल्यू कितना है? रूट 3 का वैल्यू कितना है? 1.732. सो 10 रूट 3 मतलब 17.32 है, और b 20 है. सो द स्मॉलर वन इज दिस वन. यू हैव टू फाइंड दिस वन, स्मॉलर वन. ठीक है. सो व्हिच ऑप्शन इट इज? आई थिंक द सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2.
With any questions? पूछना है? Do you have anything to ask? Option B is 10 root 3. Option B is 10 root 3. Option 2. But do you have anything to ask? आप लोग को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? Okay, so then we will stop here today. Next class हम पहले पढ़ेंगे. Next class we will first study. Next class we will first study subtraction of vectors. हम vector को कैसे subtract करेंगे वो पढ़ेंगे next class में. And then multiplication, मतलब dot product and cross product, those are the next class. Thank you so much.